guys, welcome and welcome back to my channel. It's Rima with you all, and today's video will be the most exciting and the best informative video which I can share ever in my channel. So yeah, टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया ही होगा कि मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरा इंडिगो के साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अपीयर इन एक्सेस फार्म हौज खास मेट्रो के आसपास है वो, क्योंकि अभी काफ़ी हायरिंग चल रही। इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस रिलेटेड टू दैट आई विल बी हैप्पी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं ये एक्सपीरियंस या एज अ फॉर्म ऑफ व्लॉग में शेयर करूँ, तो उसमें मैं इतना शूट नहीं किया। जितना भी क्लिप आई विल अटैच ऑल द क्लिप समवेयर हियर और हियर। क्लिप फोटो जो भी है मेरे पास, I'll attach everything. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Or if you want me to make any kind of videos related to cabin crew or anything, do let me know in the comment section. I'll be more than happy. So let's get started. So the interview timing was 8 to 10 and 8 to 11 as usual. Mostly यही टाइम रहता है हर इंटरव्यू, वर्किंग इंटरव्यू के लिए. So I reached there around 9, which was I thought I'm late because I'm a person who always reach before time, on time. I'm like that. उस दिन तो मैं जाके I was like, oh my god, I'm late, but what I'll do, I will go and see so many girls and all. So after going there, after entering the venue, I still remember I have seen at least 200 girls. They are already selected at the first round. I asked them, they have told yes, they are selected for the first round and we are waiting for the second round, which is medical. So I was a bit nervous. Oh my god, already this many girls are selected. What I'm doing, why I'm here today. Then I calm myself, no, be confident, you can do it. When you're here, you're at the same page with them. You can speak, you have two eyes, two hand, you can hear properly. You're like them only. I told myself I was confident, but सबको देख के एक होता है nervousness and all. I gave my CV to the manager and he gave me a serial number that was almost 193, something like that. And according to the serial number, we were supposed to go inside the room to appear for the first round. So I was like 192. Then also I got थोड़ा हो रहा था कि अरे यार क्यों फर्स्ट नहीं है ये. एक होता है कि हाँ सुबह सुबह एकदम जल्दी आओगे, फर्स्ट राउंड में दोगे तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. दो दैट इज़ अ मिथ. ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू आर कैपेबल दे विल ऑफ कोर्स टेक यू. इतना सभी कैपेबल होना तो दे विल टेक यू एंड विल सेंड यू फॉर PhD. अगर कोई कमी है, इतना कैपेबल उन लोगों को बस दिखाना है येस I have that potential of becoming a cabin crew. That's it. Almost after 10 or 15 minutes, I was called. My serial number was called for the first round. I went inside and we went there in a group of 5. It was not a group discussion round. बस ग्रुप में जाना है अंदर and then we will stable. Then ma'am is side है और all the interviewers are sitting in a semicircle. For the first round I'm telling. Then वहाँ पे ऐसा था कि अलग अलग क्वेश्चन या ग्रुप डिस्कशन, एक टॉपिक तुम्हारा व्यू क्या है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है. मैम विल गिव यू अ सिंगल क्वेश्चन and everyone have to answer that. That's it. That's almost everywhere. This is the first round for Indigo. So ऐसा हुआ. मैम ने एक टॉपिक दे दिया. वो क्वेश्चन के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर बोलूँगी तो ये वीडियो ही बहुत लॉन्ग हो जाएगा. बस भी मैं ज़्यादा बोलती हूँ. वरेवर. मैम के पास CV था. मैम एक 1 by 1 नेम कॉल करके मैम से यू टेल मी दिस एंड दिस सेम क्वेश्चन एंड ऑल. हाँ, और एक चीज़, अगर आप CV में कुछ मेंशन कर रहे हो और मैम को ऐसा लगा कि मैम विल आस्क यू, मैम और सर हुएवर, मैम विल आस्क यू अबाउट दैट, वो क्वेश्चन हो सकता है. जैसे आई वॉज इन स्पेशल बिफोर, सो मैम आस्क मी फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू फ्लू एंड एवरी डिटेल्स ऑफ स्पाइस एंड ऑल. सो ऐसा हो सकता है. तो CV जो भी आप बना रहे हो, प्लीज़ बी माइंडफुल. एटलीस्ट नो योर CV फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू. देन मेरा फर्स्ट राउंड हुआ. टाइम ओनली दे विल टेल यू कि आप सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड. दैट टाइम ओनली.
सो आप आंसर किया, आप अगर सिलेक्टेड हो ना मैम विल राइट समथिंग, ठीक है। और अगर आप प्रोजेक्ट हो तो शी विल कीप योर CV aside, ठीक। आई वॉज स्पीकिंग, मैम वॉज writing something. I was saying, oh my god, I'm selected or what for the first round. First round is very very difficult for Indigo, I'm telling you. If you are selected for the first round then 90% you are selected, not 100. थर्ड राउंड लास्ट राउंड में जाके भी रिजेक्ट होते हैं, बट फर्स्ट राउंड का मतलब क्रॉस करना इज़ रियली अ बिग डील. सो बेस्ट ऑफ लक. क्वेश्चन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. ये सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, आई विल गिव एन आइडिया. ओके, दे लिसन टू एवरीवन. हो गया, एवरीवन स्पोक, देन शी विल टेल these two people, suppose two people are selected, these two candidates please wait outside and rest, you can leave for the day. ऐसा कुछ that they'll tell you. If you're selected you will be asked to wait outside. If you're not selected then you can leave for the day. जिस दिन बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना, उस दिन मतलब गैप डे बहुत लॉन्ग हो जाते हैं लास्ट राउंड तक, ठीक है. तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा ही था कैंडिडेट्स. आई शेयर सम वीडियो और फोटोज हियर और हियर, यू कैन सी. सेकेंड राउंड के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट किया. एंड सेकेंड राउंड था मेडिकल राउंड. हाइट चेक, वेट चेक, BMI हो गया, फिर आइज़ चेक करते हैं, फिर कोई मार्क्स वगैरह है तो फिर स्टॉकिंग्स ओपन करने के लिए बोलते हैं. अगर कोई लेग्स में मार्क्स है तो, क्योंकि यूनिफॉर्म नी लेंथ होता है तो वो भी चेक करते हैं. कोई मार्क्स अगर है, फिर नेक एंड ऑल, everything they will check. They'll ask you whether you're wearing lenses or not. If you're selected for the second round then third round में तुम जाओगे, जो कि है कम्युनिकेशन राउंड. कम्युनिकेशन राउंड भी बहुत डिफ़िकल्ट है, वो थर्ड राउंड है और उसमें मतलब हाफ गर्ल्स रिजेक्ट हो जाते हैं. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, एक फर्स्ट राउंड और एक थर्ड राउंड बहुत गर्ल्स रिजेक्ट होते हैं. ये दोनों राउंड क्रॉस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो थर्ड राउंड में 10 girls फिर से you will go and you will have a semicircle, you'll sit and they'll give you a topic, you have to speak on that. If sir or ma'am thinks कि हाँ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए then they'll ask you. नहीं तो एक ही टॉपिक में बात करो, ख़त्म. 5 to 10 minutes, 10 minutes भी नहीं, 5 minutes बोलो. they'll मेरे बैच में ऐसा था, एक लड़की बहुत कम बोल के छोड़ दे एक दो लाइन एंड दे आर लाइक कि और बोलो, शेयर योर एक्सपीरियंस. थर्ड राउंड के बाद बहुत ही लंबा ब्रेक मिला जो कि लंच ब्रेक था. दे आल्सो टेक लंच एंड दे हैव गिवन आस आल्सो टाइम टू टेक टिफिन एंड ऑल, बट वी वर नॉट एट ऑल रेडी फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग. एकदम फास्टिंग था उस दिन मेरा. आई डोंट नो वाई, कुछ खाने के मन नहीं कर रहा था. लास्ट राउंड ही बाकी है और थर्ड राउंड का रिजल्ट भी नहीं बोला उस टाइम. तो दे गेव अस अ ब्रेक ऑफ 60 minutes एंड देन 60 minute की ब्रेक दे के इट वॉज ऑलमोस्ट 70-75 minutes they came and they declare the result of the third round. कम्युनिकेशन के बाद फोर्थ राउंड जो कि है पर्सनल इंटरव्यू राउंड विद द HR. वो एकदम HR will ask you everything regarding your job profile. If you have an experience about you, about your place, they can ask anything. They can ask you question from your CV also. Mainly यही करते हैं. अगर CV में वैसा कुछ नहीं है then they'll shift to tell me about your place and all. If you have an experience you're mentioning that in your CV then they'll ask about that. जैसे मेरा वो था SpiceJet का experience I've mentioned, so they have asked me about SpiceJet. So ये फोर्थ राउंड की था. हाँ, फोर्थ राउंड में मेरे साथ बहुत मस्ती मजाक हुआ था उस दिन. सर वॉज रियली वेरी नाइस एंड जब मैं बाहर आ रही थी ना, एवरीवन वाज लाइक you are selected. HR ऐसा behave कि you are selected. They were really very happy. They'll hire you. I was like nothing like that. एक होता है ना, एक कैंडिडेट के साथ हो जाता है मस्ती, और मेरा भी आंसर कुछ वैसा टाइप की था. सो क्वेश्चन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. ये सिर्फ मेरा एक आइडिया देना था सबको. यू कैन एक्सपेक्ट योर इंटरव्यू डे लाइक दिस. फॉर दैट ओनली आई हैव मेड दिस वीडियो. ये फोर्थ राउंड के बाद वी आर वेटिंग. मैम को ही देख रहे थे हम लोग, क्या कब अनाउंस करेगी मैम, क्योंकि मैम ही कर रही थी सब कुछ अनाउंस. एवरी राउंड मैम ही अनाउंस किया. फिर मैम आके मैम वाज लाइक, पहले नाम लिया, 10-12 नाम लिया. मैम वाज लाइक थैंक यू कैन लीव फॉर द डे. जब नाम ले रही ना मैम,
वैसे मेरे नाम तो नहीं है, मेरे नेम तो नहीं है, ये लोग सिलेक्टेड है क्या, मैं नहीं हूँ. माय गॉड. सब फिर मैम जब लास्ट में शी वाज लाइक यू कैन लीव फॉर द डे, थैंक यू. And I'm like, oh my god. Then ma'am told rest of the girls, you are selected, congratulations. Then you have to take out your CV digitally from your phone, and I'll see. Then pre-joining handbook and all, we filled all of that. So yeah, this was experience the most memorable day of my life, which changed my life totally. I'm so happy being a 60 member, 60 family. I'm so happy. So this was it for this video. I hope you like this video. If you like it, give it a thumbs up. And if you want me to make any kind of video related to cabin crew, fashion or anything, do let me know in the comment section. And so do not forget to subscribe to my channel. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके जाओ. That is it for today. Until we meet in the next video, take care. Bye. I love you.